अरे रुको रुको, आपने ब्रेकिंग न्यूज सुनी? प्राइस ड्रॉप। टेक्स्ट बुक पास पे चल रहा है महा प्राइस ड्रॉप सेल। जी हाँ, टेक्स्ट बुक पास मिलेगा केवल 249 में, उसके नॉर्मल दाम से पूरे 150 रुपए कम, पर सिर्फ 3 दिन के लिए, 16, 17, 18 अप्रैल। 700 से अधिक एग्जाम और 20 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स का प्रिपरेशन पार्टनर टेक्स्ट बुक पास। Hi, good evening everyone. This is Shefali Singla, and in this session we are going to discuss the previous year questions on computer network and operating systems. So guys, those who have joined the session, quickly give me the confirmation if the audio and the video is fine, so that we can quick start with the questions. Very good evening YouTuber, good evening Durga Prasad. Great. तो आज बेटा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो दोनों सब्जेक्ट्स के मैंने 2022 के क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, सो टुमारो विल बी टॉकिंग डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ 2021. Today we'll be covering all the questions asked in 2022 from computer networks and computer systems. Very good evening, Nikita. So let's move on to the first question. This is the first question asked in 2022. This is based on data link layer from computer networks. Very good evening, Shubham. Is DBMS completed? Almost it is completed. So in the last session, you guys wanted the questions from multiple subjects. So I thought जो 2016 के questions रह गए, उनको जब हम 2016 के बाकी सब्जेक्ट्स के करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो साथ में ही कर लेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क और ओएस के क्वेश्चंस को पहले 2017 तक लेके जाते, फिर मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। बाकी तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द last 5 to 6 years. Okay, so just try to solve this question, and if you know the answer, you get the answer, please write that in the comment section so that after 1 minute we can discuss the solution. Do you have any idea? अगर आप लोगों को आइडिया है, you know how to handle the question from data link layer, तो try करो, otherwise let me discuss the solution. You have 30 seconds more to try this question. Total data upon Tx plus Tp. Now, what is this Tx and Tp? Okay, I guess you are writing that what will be the throughput. Here, obviously, we are given that we have to find out the sender throughput is dash bytes per second. All right. So, throughput is something that we have to calculate, and we have to get the value of the total time. Basically, throughput क्या होती है? कितना data कितने time में गया? Correct? So this means that here we want the length of the message, कितना data कितने time में गया. Now what will be this total time? यहाँ पे जो हम time लेंगे, that will be the total time. Total time क्या होगा? Let us assume that here we have the sender and we have the receiver. You are very close to the concept, Durga Prasad, but यहाँ पे कुछ missing है चीजें. Sender and receiver, सबसे पहले हम दो term समझते हैं. One is the transmission time. Transmission स्पेस कम है इसलिए मैं टॉप पे लिख रही हूं. ट्रांसमिशन टाइम एंड अदर वन इज द प्रोपगेशन टाइम. लेट मी कॉल दिस ट्रांसमिशन टाइम एज टी एंड प्रोपगेशन टाइम एज टीपी. ओके,
Now what is this transmission time and the propagation time? ट्रांसमिशन नाम से समझ में आ रहा है. ट्रांसमिशन मीन्स हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द डेटा. अब ये ट्रांसमिट क्या होता है? सेंडर डेटा, सेंडर लिंक के ऊपर पहले डेटा को प्लेस करेगा, डायरेक्टली डेटा चलना शुरू नहीं हो जाएगा. जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपने अपने ट्रक में सामान लोड करवाया, डायरेक्टली आप ये नहीं बोलोगे कि कितना टाइम लगा सामान पहुंचने में. दैट इज द ट्रेवल टाइम. जितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहा था वो टाइम तो है ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा ट्रक को लोड करने के लिए. सिमिलरली जब हम लिंक के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करें, जब हम लिंक के थ्रू डेटा भेज रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ टाइम चाहिए टू प्लेस द डेटा ओवर द लिंक. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द लिंक बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. सम टाइम इज रिक्वायर्ड to place the data on the channel. This is known as the transmission time. Okay, कितना डेटा, कितना टाइम चाहिए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम. अब ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कितना डेटा ट्रांसमिट, डेटा ज्यादा ट्रांसमिट करना है तो इट विल बी टेकिंग मोर टाइम. अगर डेटा कम ट्रांसमिट करना है, इट विल बी टेकिंग लेस टाइम. इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने बैगेजेस को ट्रक में लोड करवा रहे हो. Are you getting this point? So transmission time is dependent upon the message size. किस साइज का डेटा आपको ट्रांसमिट करना है, एंड व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल. जिस चैनल के ऊपर, जिस लिंक के ऊपर आप डेटा को प्लेस कर रहे हो, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ दैट चैनल. ओके, तो दुर्गा प्रसाद आपने बिल्कुल सही लिखा है. दिस इज L upon B, where L is the shorthand notation that is representing the length of the message and B is the bandwidth. So transmission time is nothing but that is length upon the bandwidth. यहाँ पे throughput क्या होती है? कितना डेटा हमने total time में send किया. Now question arises is how to calculate this total time. हमें total time calculate करना है. तो सबसे पहले क्या होगा? First of all, sender is taking some time to place the data on the channel, so that is the transmission time of the sender. After the data is placed on the channel, जब सोर्स पे ट्रक में सामान लोड हो गया, अब उसके बाद सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए ट्रक ट्रेवल करेगा. तो ट्रक कितने टाइम में सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच डिस्टेंस इट हैज टू कवर एंड विद व्हिच स्पीड इट इज मूविंग. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So that is known as, actually when the data is moving, that is known as the propagation time. And propagation time is dependent on the distance upon the speed. आप velocity बोल लो, speed बोल लो, one and the same thing. Distance upon velocity, जिसको हम popularly लिखते हैं d upon v. पहले कुछ टाइम लगा सेंडर पे डेटा प्लेस करने के लिए, देन प्रोपागेशन टाइम, डेटा ट्रांसमिट पहुंचा, उसके बाद रिसीवर इज गोइंग टू सेंड द एक्नॉलेजमेंट. तो ये एक्नॉलेजमेंट को प्लेस करेगा चैनल के ऊपर. एक्नॉलेजमेंट का साइज कितना है? अगर आपको गिवन है देन विल कंसिडर इट. यूजुअली ये गिवन नहीं होते तो सिंपली वी कैन इग्नोर इट. तो आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज में देखा होगा, वहां पे लिखा होता है ट्रांसमिशन टाइम प्लस ट्वाइस द प्रोपागेशन टाइम. अगर एक्नॉलेजमेंट का साइज, दैट इज द मैसेज साइज इज लेस, तो इट कैन बी इग्नोर्ड. बट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू कंसिडर इट. इन दैट क्वेश्चन साइज ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन. So plus transmission, अब receiver क्या करे? It is sending the acknowledgement to the sender. Acknowledgement को place किया channel के ऊपर. Now the acknowledgement will travel all through from receiver end to the sender end. Acknowledgement receiver से किसके पास जा रही है? Sender के पास. So this is known as the propagation time. Propagation time में difference आएगा? नहीं आएगा. चाहे sender से receiver जाना है या receiver से sender आना है. Basically we are considering the distance and the speed, that is same. So this can be simply written as transmission time of the sender plus propagation time for the data as well as the acknowledgement is same. So I am writing this as twice the propagation time plus transmission time of the acknowledgement. ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया, प्रोपगेशन टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, वी हैव रिटन द फॉर्मूला. ट्रांसमिशन टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, वी हैव रिटन द फॉर्मूला. इसके बाद सिर्फ मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है. एक बार बस मुझे कंफर्मेशन दे दो वेदर दीज टू फॉर्मूलाज आर क्लियर. यस,
तो दुर्गा प्रसाद, यू हैव स्किप्ड वन थिंग. आपने ट्रांसमिशन टाइम लिया और डेटा का प्रोपगेशन टाइम लिया एक ही बार. व्हाट अबाउट द एक्नॉलेजमेंट? No ma'am means no doubt or not clear. It's clear. All right. So now let's substitute the values here. A sender uses stop and wait ARQ protocol. Stop and wait ARQ क्या करते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है. Sender has sent one frame. Stop and wait means sender ने एक frame send किया. Data is sent, then it is waiting for the acknowledgement. Multiple frames are not transmitted in one single round trip time. So एक frame जाएगा, then it will wait for the acknowledgement, then it will be sending the next frame. Okay, so it has sent the data, only one frame is sent. After that, it will be waiting for an acknowledgement. जब acknowledgement आएगी, then it will be sending the next frame. This is the concept of stop and wait ARQ. But इस case में क्या होता है? Throughput is less as compared to other protocols. We have go back and selective repeat as well. In go back in or selective repeat, we can send multiple frames without waiting for the acknowledgement. तो इसका मतलब एक round trip में हम multiple frames send कर सकते हैं. But anyhow, that is not asked in the question. Simply, we should know that what is the stop and wait ARQ. This means that it is going to send one frame, wait for the acknowledgement. As it gets the positive acknowledgement, then it will be transmitting the next frame. Clear? So a sender uses stop and wait ARQ protocol for reliable transmission of frames. Frames are of 1000 bytes. इसका मतलब किसका size given है? Length, message size or frame size is given to you. So first of all, let's calculate the transmission time. So message size, this is frame size, length upon bandwidth. Length is given as 1000 bytes divided by bandwidth. The transmission rate at the sender is 80 kbps. That means we are given with bandwidth 80. This is the value for B and this is the value for L. 80 k, this is small b. अब यहाँ पे मैंने कैपिटल B और स्मॉल b लिखा है. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. कैपिटल B इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बाइट्स एंड स्मॉल b इज रिप्रेजेंटिंग द बिट्स. जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ऑलवेज टेक केयर ऑफ द यूनिट्स. अगर बिट्स और बाइट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो डेफिनेटली 8 का डिफरेंस आ जाएगा. वी नो दैट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. 8 bits. So let's convert the units. It comes out to be 1000 into 8 bits. 8 bits divided by 80 kilo is 10 raised to power 3 bits per second. Okay, so this is 8 bits per second. So this is cancelled out. This is 10. So bits से bits cancel हो गए. It comes out to be 0.1 second. हमें तो बेसिकली अल्टीमेटली वी वांट द आंसर इन सेकंड्स. यहाँ पे आपको 100 मिली सेकेंड गिवन है, चाहे आप इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लो. 0.1 सेकेंड इज नथिंग बट दैट इज 100 मिली सेकेंड्स. Yes. So transmission time comes out to be 0.1 second. Similarly, we'll calculate the propagation time क्योंकि हमें total time चाहिए and total time is calculated on the basis of the propagation time as well. Here, size of an acknowledgement is given. That means first of all, let's calculate the transmission time of the acknowledgement. This is for the sender. Transmission time of ACK. Acknowledgement size is given as 100 bytes. So that means the value of L is given as 100 bytes and transmission rate is 8 kbps. Kilobits per second. Convert the units. It comes out to be 100 into 8 bits divided by 8 into 10 raised to power 3 bits per second. So this also comes out to be 0.1 second. 400 millisecond. Yes, correct. Total time will be 400 millisecond. Okay. After that,
It is saying that one way propagation delay. अब यहाँ पे आपको propagation delay और propagation time calculate करने की जरूरत नहीं है. Propagation delay is already given to you, that is 100 milliseconds. So propagation time is given as 100 milliseconds. This can also be written as 0.1 second. Now, if I'm going to substitute all these values here, I'll get the total time. So total time will be transmission time of the sender is 0.1 plus propagation time is 2 into 0.1 plus acknowledgement transmission time is 0.1. I'm calculating all this in seconds, so it comes out to be 0.4 seconds. Correct? So we got the total time, we know the length. Just substitute those values here. Length of the messages, किस length का message send करें, that is 1000 bytes. So it comes out to be 1000 bytes divided by total time. This is 0.4 seconds. Ultimately हमें answer bytes per second में चाहिए. Just calculate it. This comes out to be 20, 5, 0 and 0. So it comes out to be 2500 bytes per second. Is this clear? So the correct answer for this question is 2500 bytes per second. Answer is A. The same question, this is a previous year GATE question, and this question was asked in GATE 2016. 16 या 17 का question है, most probably this was asked in GATE 2016. Is this clear to everyone? तो मेन क्रक्स जो था दैट इज थ्रूपुट का मतलब हमें मालूम है कितना डेटा कितना काम कितने टाइम में किया. सो दैट इज हाउ मच डेटा इज ट्रांसमिटेड इन टोटल टाइम. टोटल टाइम इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स में से आएंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है. यू विल बी गिवन विद द मैसेज साइज एंड द बैंडविड्थ एंड यू आर सपोज्ड टू रिटर्न द ट्रांसमिशन टाइम. आपको प्रोपगेशन टाइम कैलकुलेट करना है. गेट में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और निलित साइंटिस्ट भी एग्जाम में भी आते हैं. Is it clear to everyone? For Durga Prasad, it is crystal clear. What about others? Shall I move to the next question? I guess whatever I have written as the last line, that is hidden. बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था. दिस लास्ट लाइन वॉज इंडिकेटिंग, मैंने अभी ध्यान दिया शायद वो हाइड हो गई है. सो आई हैड रिटन प्रोपगेशन टाइम इज इक्वल टू 100 मिलीसेकंड. दिस वाज गिवन टू अस. दिस कैन बी रिटन एज 0.1 सेकंड. मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स कन्वर्ट करवाए थे. दैट्स इट. Shall I move to the next question? जो लोग नए हैं बेटा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज इन द टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही सेशन खत्म होता है आई शेयर द पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब सेशंस. Apart from that, if you have any doubt or query, you can post that in the Telegram group. Also, you can directly interact with me. Soon we'll start conducting the quiz and the polls in our Telegram group, and the link is given in the description box. So just go through it and you'll get the link. अगर नहीं मिलता है ट्राई करके देखो. अगर नहीं मिलता है towards the end of the session, I'll share my screen and I'll show you that from where you can join this group. Okay. Next question. This is from operating systems. This is the question from operating systems. And this question was also asked in GATE exam. It was asked in 2006.
I'm so sorry. This question is based on scheduling, process scheduling. Read the question, try to get the meaning. After 1 minute, I'll discuss the solution. तो क्वेश्चन की लेंथ देख के डरना नहीं है. What you have to do is read the question, try to get the meaning, and parallelly आप डेटा जो important डेटा लगता है आपको just note it down. This is saying that consider 3 processes all arriving at time 0. यानी कि process scheduling में अगर हम arrival time की बात करते हैं that is 0. So let me write here. We are given with 3 processes. So I'm calling that as P1, P2 and P3. Next one, arrival time of all the processes is 0. So arrival time is 0. Next, with total execution time is given as 10, 20 and 30 units respectively. Each process spends first 20% of execution time doing IO. अब यहाँ पे क्या operations perform कर रहे हैं? ये जो total time है, first of all it is going to spend some time in doing IO. After that it is going to perform some CPU specific operations, and then next last 10 percentage is again spent in performing the IO again. तो सबसे पहले first 20% of 10 is 2, 20% of 20 is 4, and this is 6. 70, 7, 14 and 21. Last 10% again performing IO operation. This is 1, this is 2 and this is 3. Percentage calculate करके we got the time. Now this is saying that the operating system uses the shortest remaining compute time first scheduling algorithm. That means we have to apply shortest remaining time first scheduling algorithm. Schedules a new process either when the running process gets IO blocked on IO or when the running process finishes its compute burst. अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम डज द सीपीयू रिमेन आइडल. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट अ गैंट चार्ट, राइट? जब भी हम गैंट चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो. अब कुछ लोग हैं जो आईओ और सीपीयू दोनों को कंसिडर करके चल रहे हैं. सिंपली गैंट चार्ट पे आप सीपीयू परफॉर्मेंस दिखा सकते हो. पहले मैं दोनों के लिए कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ so that you get the solution in detail. After that we'll be only constructing whatever is required. So this is IO and this is CPU time. Gantt chart always starts from 0. 0 पे all the processes are available. We know that IO operations can be overlapped. IO operations can be overlapped as much as possible. Initially all the processes has arrived. First 2 units तक all the 3 processes are busy in performing the IO. This is P1 is also present here, P2 and P3. After 2 units of time, P1 will come out of the IO and CPU is idle, तो ये CPU पे schedule हो जाएगा. As of now, no option is available. After 4 seconds, P2 will also come out. This is after 4 seconds, P2 will also come out, and here we have only P3. By this time, P1 has already executed for 2 units, so remaining is 5. अब जब आपके पास 2 processes CPU पे schedule हो सकते हैं, 2 processes are ready to execute on the CPU, then we have to apply the process scheduling algorithm. Here we have to apply shortest remaining time first. नाम से समझ में आ रहा है, जिसका remaining time कम है, that has to be scheduled next. So that is for P1. P1 का कितना time left है? Compare 5 and 14. Obviously 5 is smaller, so P1 will continue with its execution. At 6 units, P3 will also come out. यहाँ पे P2 and P3 both are available. 2 units more are over. So remaining time is 3, 14 and 21. Obviously 3 is smaller, so it will execute for 3 units of time. 9. By this time now this is
idle. So P1 has executed. After CPU is over, it will execute for IO. 1 unit के लिए खत्म हुआ, then P1 will come out of the system. By this time P2 was scheduled, remaining time is 13. अभी P3 is also ready to execute. Compare the time. ये तीनों प्रोसेसेस अवेलेबल है. P2 और P3 में से remaining time less shortest remaining time is for P2, so P2 will continue with its execution. P1 खत्म हो चुका, तो 13 यूनिट्स के लिए हम एक स्ट्रेच में इसको एग्जीक्यूट कर देंगे. 10 plus 13 is 23. So P2 has completed its execution. CPU time is over. Now it will go for performing the IO. Till 25 it will be performing IO, and by this time P3 will start its execution. 19. Now P2 will come out of the system. Only P3 is available. P3 कब तक execute करेगा? Remaining time is 19. So this will be executing for 44. After this, P3 will move to the IO, 3 units, 47. So total, this is idle. This was idle. हमें CPU idle time देखना है. CPU is idle from 0 to 2. तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो. जिन लोगों ने सिंपली सिर्फ सीपीयू के लिए गैंट चार्ट बनाया, दैट इज ऑल्सो फाइन. यूजली मैं सजेस्ट करती हूँ सिर्फ सीपीयू के लिए बनाओ, आपको आईओ का ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है. अब हमें मालूम है 2 यूनिट्स तो कम से कम आईओ के लिए चाहिए. 0 से 2 के बीच में दिस रिमेन्स आइडल. देन P1 विल बी स्केड्यूल्ड. दिस सिंस दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये forcefully it will not take out the process out of the CPU. P1 will complete its execution. It will execute till 9. Then P2 will be scheduled. It will complete its execution. 9 plus 14 is 23. After that, till 44, P3 will be executing. उसके बाद लास्ट पे हमें ये 3 यूनिट्स का टाइम चाहिए, 47. So जिन लोगों ने ये येलो वाला गैंट चार्ट बनाया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, just calculate the CPU remaining idle time. जब percentage calculate करनी है, तो CPU idle time is CPU idle time. जब percentage calculate करनी है, so it is कितने time के लिए idle था? 2 units here and 3 here. 2 plus 3 total was 47. Correct? हमें percentage में calculate करना है, so into 100. This comes out to be 10.6%. So yes, B is the right answer for this question. Clear? Simple. तो although यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा हमें processes को बाहर नहीं निकालना पड़ा, so answer for this question is it's option B. आज वाले सेशन में मैं सिर्फ 2022 के क्वेश्चंस कर रही हूँ. मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2006. बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कौन सी ईयर का क्वेश्चन है. दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स. Computer networks. Here we have to return the number of IP fragments that will be transmitted and what will be the contents of the offset field of the last fragment. Last fragment में offset field क्या होगा? This is based on IPv4 header. This question is based on IPv4 header. Try this question. UDP and TCP are the two protocols of the transport layer. So transport layer is sending some data और हर layer अपना header add करती है. So just add it. That is the biggest hint to handle this question. Okay, just let me know you want to try the questions या question दिखाती मैं directly solutions discuss करूँ. Although उस चीज का बहुत ज्यादा benefit नहीं होते, but as you say, we'll go with that. B. Okay, I guess B is the answer for the previous question. For this question, what will be the answer?
IPv4 is used at the network layer. So first of all, the transport layer, this is the network layer. Transport layer sends some data. Host A sends a UDP datagram containing 8,880 bytes of user data to host B. यानी कि डेटा का साइज कितने है? That is 8,800. So UDP data is given as 8,880 bytes of data over an Ethernet LAN. Ethernet frames may carry data up to 1500 bytes, यानी कि maximum transferable unit is 1500 bytes. तो obviously this is bigger. मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट का मतलब क्या होता है? एक फ्रेम में मैक्सिमम आप कितना डेटा भेज सकते हो? साइज ऑफ यूडीपी हेडर इज 8 बाइट्स. जब डेटा नेटवर्क लेयर के पास आएगा तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट लेयर अपना डेटा सेंड करेगी. हियर वी आर गिवन दैट यूडीपी हेडर इज 8 बाइट्स. तो अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो हियर द टोटल डेटा, टोटल साइज, अब यहां पे टोटल साइज डेटा कितना ट्रांसमिट होगा? दैट विल बी 8,880 प्लस 8, दैट इज यूडीपी हेडर. सो टोटल साइज, इसमें हमने आईपी हेडर ऐड नहीं किया. मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट इज 1500, बट वी हैव नॉट एडेड हियर द आईपी हेडर. सो टोटल साइज excluding IP header is 8,888 bytes. ये क्लियर हुआ? अब अगर मैं इसको पिक्टोरिकली एक्सप्लेन करूं, here we have to transmit 8,000 and this much bytes of data, बट यहाँ पे किस साइज का फ्रेम जा सकता है आपके पास? जिसका साइज टोटल 1500 bytes है. अब हर फ्रेम के साथ हम हेडर ऐड करते हैं. साइज ऑफ आईपी हेडर इज गिवन एज 20 bytes. So here the remaining data part comes out to be 1480. एक हमारे पास स्केलिंग फैक्टर होता है. कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द स्केलिंग फैक्टर फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के लिए हम एक स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं, दैट इज 8, राइट? कितनी बाइट्स का डेटा जाएगा उसको हम चेक करते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 8. इट शुड बी डिविजिबल बाय 8. So check it, is it divisible by 8? 8 से divide किया, remainder is 6, 64, 4. Yes, it's divisible by 8. So this can go. Divide by 8 करते हैं बच्चे, क्योंकि हमारे पास जो fragmentation offset है, total bits are 16, out of which to represent fragmentation offset, we are just using 13 bits. Out of 16 bits, we are using 13 bits, और जो बाकी की 3 bits हैं, those are not used. 3 bits are not used. तो ये जो 3 bits का गैप आ रहा है, 3 bits के साथ कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 2 raised to power 3, that is 8. So that's why the scaling factor is used as 8. Scaling factor is 8. Correct? So these bits are unused. सबसे पहले हमें क्या बताना है? देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन द आईपी हेडर. हाउ मेनी टोटल आईपी फ्रेगमेंट्स विल बी ट्रांसमिटेड? कितने आईपी फ्रेगमेंट्स जाएंगे? एक फ्रेगमेंट में कितना डेटा जा सकता है? 1480 बाइट्स कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन फ्रेम. और हमें एक्चुअली कितना डेटा ट्रांसमिट करना है? 8,888. तो कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट्स? नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट्स, number of IP fragments will be equal to how much data we have to transmit, that is 8,888 divided by एक फ्रेम में कितना डेटा जा सकता है? हेडर तो हर एक के साथ ऐड होगा ही होगा, that is 1480. Seal value or floor value? Should I take here seal value or floor value? Obviously we'll be taking here seal value, बिकॉज अगर 6 पॉइंट समथिंग आता है तो इसका मतलब 6 फ्रेम से ज्यादा फ्रेम चाहिए. 7 फ्रेम में कुछ पार्ट जा रहा है, तो एनी हाउ 7 फ्रेम यूज तो हुआ. सो दिस इज, हियर वी हैव टू टेक द सील वैल्यू. सो दिस कम्स आउट टू बी 7. दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड बी इज डिस्कार्डेड.
Second part is saying that what will be the contents of the offset field in the last fragment. लास्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट फील्ड क्या होगा? बेसिकली ऑफसेट रिप्रेजेंट दैट कि इस पर्टिकुलर फ्रेम से पहले कितने फ्रेम्स जा चुके हैं. हमें ऑफसेट किसका कैलकुलेट करना है? लास्ट फ्रेगमेंट ऑफसेट मींस लास्ट फ्रेगमेंट ऑफसेट means we have to calculate the seventh fragment offset. ये तो हमें क्लियर है कि 7 फ्रेगमेंट्स होंगे. 7th फ्रेगमेंट ऑफसेट. 7th फ्रेगमेंट का मतलब है इससे पहले 6 फ्रेगमेंट्स जा चुके हैं, राइट. 6 फ्रेगमेंट्स आर ऑलरेडी ट्रांसमिटेड. फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब होता है 7th फ्रेगमेंट का फर्स्ट बाइट का नंबर क्या होगा. 6 फ्रेगमेंट कंप्लीटली गए हैं. इन वन फ्रेगमेंट how much data was transmitted? It is 1480, right? 1480. और क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 8 बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट द फ्रेगमेंट ऑफसेट. तो स्केलिंग फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 1110. आंसर इज सी. तो बाकी सारी चीजें आई गेस सिंपल थी. मेन थिंग वाज व्हाई आर वी डिवाइडिंग इट हियर? दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्केलिंग फैक्टर for the calculation of offset, fragmentation offset. Clear? Guys, quickly give me the confirmation. Is it clear? This is very important type of question. This question was also asked in GATE exam. गेट NILET 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने पहले भी बताया, मेजॉरिटी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में जो आ रहे हैं ना, मेजॉरिटी क्वेश्चंस एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस. तो इसलिए जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस. जो हम बोलते हैं ना कि मैम इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस बता दो, लास्ट 20 ईयर्स के, टू बी ऑन सेफ साइड लास्ट 20 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस कर लो. आपको इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, वेब टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बिकॉज बाय 2012 वी हैड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजीज इन द गेट एग्जाम एज वेल. नाउ इट्स नॉट देयर, लास्ट 10 ईयर से नहीं है, बट बिफोर दैट इट वाज देयर. तो आपको उसके भी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इज दिस क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. This is based on the disk. थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको. It may take 1 or 1.5 minute. I just want you to recall the concept. अपने माइंड में बस फॉर्मूला घुमा के देख लो. एग्जैक्ट कैलकुलेशन वैल्यू नहीं भी आई, दैट्स फाइन. एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो. कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो आप. Consider a disk pack with seek time of 4 milliseconds. That means first of all we are given with the seek time. Whatever information is given to you, just note it down. Seek time is given as 4 milliseconds and a rotational speed of 10,000 rotations per minute. So rotational speed is given as 10,000 rotations per minute. इसका मतलब क्या? In 1 minute और 10,000 rotations के लिए कितना टाइम चाहिए? It is going to take 10,000 rotations will be taking place
It means that for 10,000 rotations, it requires 1 minute. Or we can say that 60 seconds. So what is the time required for one rotation? For one rotation, it requires 60 divided by 10,000 seconds. Just simplify it. It comes out to be 0.6 millisecond. Correct? For one rotation, 6 milliseconds are required. Up for one rotation, 0.6 millisecond is required. Now, this is 6 milliseconds. 3 zeros are there. So it is 6 milliseconds. 6 milliseconds. एक rotation के लिए 6 milliseconds चाहिए. It has 600 sectors per track. So number of sectors are given as 600 per track. एक track के ऊपर कितने sectors हैं? 600. I hope you understand that what is the meaning of track. So this is one track. जो data store होता है वो track पे sectors के अंदर होता है. So this way we have 600 sectors, 1, 2, 3 and so on up to 600 sectors are there. After that, each sector can store 512 bytes of data. So sector size is given as 512 bytes. Consider a file stored in the disk. The file contains 2000 sectors. File में कितने sectors हैं? 2000 sectors are there. Assume that every sector accesses necessitates a seek time and the average rotational latency. First of all, what is this average rotational latency? That is nothing but the time required for half rotation. So rotational latency is the time taken for the half rotation. अगर एक rotation के लिए 6 milliseconds चाहिए तो half of 6 milliseconds is 3 millisecond. This is the rotational latency. तो हर एक sector को access करने के लिए we have to access 2000 sectors. कितने sectors access करने? 2000 sectors. And every sector requires the seek time and the average rotational latency. Seek time is given to you. Average rotational latency comes out to be 3 milliseconds. So total 2000 sectors के लिए कितना time चाहिए? 2000 into 3 plus 4 milliseconds. That comes out to be 7 milliseconds. So each sector requires seek time plus rotational latency. अब इसके आगे प्रोसीड करने के दो तरीके. अब यहाँ पे क्या बोले? एक रोटेशन के लिए 6 मिलीसेकेंड्स चाहिए, राइट? तो एक रोटेशन में कितने ट्रैक्स कवर हो रहे हैं? 600 ट्रैक्स. और अदर वे इज आप यहाँ पे बाइट्स कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर वन ट्रैक, फॉर वन रोटेशन इट इज टेकिंग 600 मिलीसेकेंड. एक रोटेशन में कितने सेक्टर्स कवर होंगे? 600 सेक्टर्स. इन टोटल कितना डेटा जाएगा? 512 बाइट्स ऑफ डेटा विल बी सेंट. What I'm saying is 6 milliseconds में एक rotation cover हो रहा है. One rotation means 600 sectors and each sector is containing 512 bytes of data. This much data is covered. 512 bytes of data will be covered in 01.1 मिलीसेकेंड. करेक्ट? अब यहां से कैलकुलेट कर लो. हमें क्या चाहिए? वी वांट, दिस इज नथिंग बट दिस इज वन सेक्टर. एक सेक्टर का डेटा कवर करने के लिए 0.01 मिलीसेकेंड चाहिए. 2000 सेक्टर्स के लिए वी नीड द सीक टाइम. सीक टाइम इज 4 milliseconds. Rotational latency is 3 milliseconds plus the transfer time is
0.01 millisecond. This is nothing but this comes out to be 14,020. Moreover, you could have also made a guess here कि हमें seek time और rotational latency तो चाहिए ही चाहिए, plus we need the transfer time. Transfer time we have calculated here. For one sector, transfer time is what we have calculated for one sector. Transfer time is 0.01 millisecond. और हमें कितने सेक्टर्स का डेटा ट्रांसफर करना है? 2000. क्लियर? आप गेस कैसे कर सकते थे यहाँ पे? आई गेस ये पिक्चर के पीछे हाइड हो गया. What I had written here, last line, for one sector, transfer time is 0.01 millisecond. Okay? Make sense? Any doubt? यहाँ पे हमें रैंडम या सिक्वेंशियल एक्सेस कुछ नहीं बोला, इनडायरेक्टली हमें ये बता दिया कि रैंडम एक्सेस है. कैसे रैंडम एक्सेस है? Because for each sector it is calculating the seek time. Seek time means how much time is required to place the read write header on the required track. सबसे पहले क्या होता है? रिक्वायर्ड ट्रैक पे जाना है, ट्रैक के बाद फिर रोटेशनल टाइम कैलकुलेट करते हैं, रोटेशनल लेटेंसी, in order to place the read write header on the correct sector. 2000 into 0.01 तो होगा ही होगा, प्लस पहले ये तो बचे ट्रांसफर टाइम है. सबसे पहले जब आपको किसी भी सेक्टर का डेटा ट्रांसफर करना है, व्हाट वी नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीच टू द रिक्वायर्ड ट्रैक. रिक्वायर्ड ट्रैक पे पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए उसको हम बोलते हैं सीक टाइम. उसके बाद ट्रैक पे पहुंचने के बाद वी हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर सेक्टर, जिस सेक्टर के डेटा को ट्रांसफर करना है. तो सेक्टर पे पहुंचने के लिए वी नीड टू एड द रोटेशनल लेटेंसी. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, टोटल ट्रांसफर टाइम कितना होता है, दैट इज द सीक टाइम. सबसे पहले ट्रैक पे पहुंचेंगे, रिक्वायर्ड ट्रैक. रिक्वायर्ड ट्रैक के बाद वी हैव टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सेक्टर. फॉर दैट वी नीड टू एड द रोटेशनल लेटेंसी. Rotational time लिख लो, you can directly write here the rotational latency. Rotational latency is nothing but that is the half of the rotation time. Rotational latency, इससे हम सेक्टर पे पहुंचे, सेक्टर पे पहुंचने के बाद डेटा ट्रांसफर करने, that is known as the transfer time. You get this point? तो सिर्फ 2000 into 0.1 नहीं करेंगे, 0.01 नहीं करेंगे. I'm marking this line again. Assume that every sector, हर सेक्टर को एक्सेस करने से पहले, सेक्टर एक्सेस से पहले क्या जरूरी है? necessitates a seek and the average rotational latency. जब डिस्क घूमती है, ऑन अ डिस्क देयर आर मल्टीपल ट्रैक्स. पहले हम सीरीज में देख पाते थे ना, नाउ डेज तो वी आर नॉट यूजिंग सीरीज. तो जो डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर होता है ना, दैट इज स्टोर्ड. यस, सीक टाइम इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 4 मिलीसेकेंड्स. तो सबसे पहले हर सेक्टर के लिए वी आर एडिंग द सीक टाइम, इसीलिए मल्टीप्लाई करवाए. एडिंग द सीक टाइम, एडिंग the rotational latency, adding the data transfer time for one sector. I have calculated here the time required to transfer the data of one sector. समझ में आया? तो हर सेक्टर के लिए हमें तीनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ रही है. सीक टाइम, बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें 2000 सेक्टर्स का डेटा ट्रांसमिट करना है, डेटा ट्रांसफर करना है. तो हर सेक्टर के लिए पहले ट्रैक चाहिए, देन द सेक्टर नंबर और फिर सेक्टर का
ट्रांसफर टाइम, चाहे आप डायरेक्टली 2000 सेक्टर्स का ट्रांसफर टाइम अलग से कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2000 मत करवाओ। मैंने यहाँ पे 512 बाइट्स का ट्रांसफर टाइम कैलकुलेट करवाया। व्हाई आई हैव टेकन दिस एज 512 bytes because the sector size is 512 bytes. So I have calculated the transfer time of one sector, or then I have multiplied this with 2000. Yes, this was also asked in the GATE exam. GATE 2015. GATE, this question was also there in the GATE exam. मुझे मैंने बताया आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके पास गेट क्वेश्चंस है। वी शुड प्रिपेयर गेट 1 मार्क और 2 मार्क और बोथ। लास्ट 20 इयर्स के गेट के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जो गेट का सिलेबस है, डीबीएमएस आपके सिलेबस में भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में भी है, एल्गोरिथम्स आपके सिलेबस में भी है, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज देयर, computer organization and architecture, digital, theory of computation. So all the subjects are there in NILET Scientist B. गेट में वेब टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2012 तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे, क्योंकि गेट के सिलेबस से ये दो सब्जेक्ट्स निकल गए थे। सो इट्स माय सजेशन कि लास्ट 20, जैसे अभी हमने देखा कि 2006 का क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो टू बी ऑन सेफ साइड लास्ट 20 इयर्स के गेट के सारे पेपर्स कर लो। ओके, I guess lot many doubts are there in operating systems and computer networks. And obviously इससे पहले जो हमने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस किए हैं, उनसे थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड हियर। तो आज के लिए इतना काफी है। और क्वेश्चंस करने हैं? Is it sufficient for today or you want more questions? Yes ma'am means is it sufficient और क्वेश्चंस करने? yes और no जब तक आपका आता है ना, मैंने पहले भी बताया, तब तक मैं 2-3 स्टेटमेंट्स बोल देती हूँ, तो वो समझ में नहीं आता कि yes no कौन सी स्टेटमेंट के लिए आया है। तो बेटर आइडिया इज एक कीवर्ड लिख दिया करो, सो दैट आई गेट टू नो कि ये yes और no किस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग था। सफिशिएंट, ऑलराइट। सो यहीं पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। टुडे एज यू नो दैट एट 9 PM वी विल बी हैविंग द मास्टर क्लास फॉर हाफ एन आवर, so you can join that session at sharp 9. I thought of discussing these more questions. Anyhow, जो लोग नए, एक मैंने देखा यार आप लोग सेशंस लाइक ही नहीं करते हो, you have not subscribed for the channel. If you are liking the session, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रही है, चीजें समझ में आ रही है, आई एम शेयरिंग द PDF with you guys, इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी लाइक नहीं करते हो, that's really bad. तो इफ यू वांट द PDF, तो वो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। सो इन दिस टेलीग्राम ग्रुप डेली बेसिस पे मैं PDF शेयर करती हूँ फॉर ऑल द यूट्यूब सेशंस, डाउट्स एंड डिस्कशन will be there. You can directly interact with me. Quiz and poll will also be conducted. Now let's go through how to subscribe for this channel. बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि मैम चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, लिंक ही नहीं मिलता है। तो एक बार देख लेते हैं लिंक कहां से मिलेगा आपको। ओके, सो करंटली दिस सेशन इज गोइंग ऑन। तो आप लोग क्या करोगे? ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू इट्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जाके हियर यू हैव द लिंक फॉर द मास्टर क्लास। आज वाली मास्टर क्लास पे पहुंच जाओगे आप। दिस विल टेक यू टू द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। So here you will be able to see the link for the session. तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। Okay, and second link is for the Telegram. This is for super coaching. Telegram का लिंक ये था, join gate super coaching Telegram. तो इस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली this will take you to the Telegram group. Okay,
And those who want to cover the 100% syllabus or सारे syllabus की PDF चाहिए, for that you can join super coaching. Currently the sale is going on. So what you have to do is go to NIC NILET Scientist B, and जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो here it will show you the offer. तो सबसे पहले you can go to the courses. आप courses देख सकते हो यहाँ पे. Okay, lot many courses are available, and after that you can go to the super teachers. You can check for the profile, demo classes, live series, mock test, study notes. तो notes आपको दिख जाएंगे, but I guess without subscription you won't be able to download it. So we have three plans: 1 year plan, 6 months, and 3 months plan. I'll suggest you to go with at least 6 months plan, because 6 month plan अगर होगा तो ही आप syllabus cover कर पाओगे. Anyhow जो recorded sessions है वो available होंगे, but 3 month plan में आपको setting बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी. कॉन्सेप्ट्स लर्न कर रहे हो, फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आप देख लो अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है. बट फ्रॉम माय साइड इट इज रिकमेंडेड दैट इफ यू गो फॉर 6 months प्लान, नॉट मच डिफरेंस इज देयर. अभी प्राइस और कम होगा. दिस इज फॉर 4269. नाउ इफ यू अप्लाई हियर द कूपन कोड, बाय डिफॉल्ट कूपन आपके पास क्या लगा हुआ है, दैट इज NIC 35. नाउ लेट्स अप्लाई हियर द कूपन, दैट इज शेफाली S. Now this is for 3964. तो ये 3100 समथिंग है. दिस इज तो सिर्फ 800 का डिफरेंस आ रहा है, उससे 3 months की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी. प्लस टेक्स्ट बुक पास इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सुपर कोचिंग. अगर आपने सुपर कोचिंग लिया तो आपको टेक्स्ट बुक पास की जरूरत नहीं है. अदर्स दोज हु वांट टू गेट द टेक्स्ट बुक पास, you can directly go for textbook pass. Okay, if you have any doubt or query, textbook pass के लिए भी you can apply the coupon code to get the extra discount. यहाँ तक कोई डाउट? सो दिस इज अबाउट द टेलीग्राम ग्रुप. आई होप आप सबको लिंक मिल गया. सो महा प्राइस ड्रॉप सेल इज गोइंग ऑन. दिस इज द लास्ट डे फॉर दिस सेल. आज 18th April है, तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास इज अवेलेबल फॉर 2224. बाय if you want to get the extra discount approximately 200 के आसपास पड़ेगा, then don't forget to use the code, that is Shefali S pass. मैंने दो कूपन कोड्स बताए, एक पास के लिए और दूसरा सुपर कोचिंग के लिए. सुपर कोचिंग के लिए, फॉर सुपर कोचिंग कोड इज शेफाली S, and for textbook pass, if you have any query, please write in the chat section, because I'm done for the session. For textbook pass, code is Shefali S pass. मास्टर क्लासेस एल्गो और एनी अदर सब्जेक्ट. आज लास्ट क्लास है एल्गो के ऊपर. ओके, एंड देन विल स्टार्ट विद सम अदर सब्जेक्ट. आई गेस उसके बाद एल्गो की जगह हम कोआ स्टार्ट कर देंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. सो टुमारो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. तो स्केड्यूल इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. डेली वी आर हैविंग 2 सेशंस. यस्टरडे बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी मैं लाइव नहीं आ पाई, कल लाइव नहीं हुआ था. अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे हमारा स्लॉट फिक्स्ड है, दैट इज 5 PM यूट्यूब सेशन था, यूट्यूब, एंड 9 PM मास्टर क्लास. आज मास्टर क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो पहले नहीं आए प्रीवियस ईयर्स में, like hashing के ऊपर questions है. So there are some good questions in today's session, so don't forget to join today's master class. Hardly 30 minutes का सेशन होता है, तो वो पता भी नहीं चलता कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ है ना. तो इससे पैरेलली छोटा छोटा टॉपिक करके आपका एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन आस्क. तो एक सब्जेक्ट की जगह 2 सब्जेक्ट का मिक्सचर ठीक है, या एक और सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं? ऑब्वियसली जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगेगा. आई हैव नो इश्यूज, बिकॉज एनी हाउ मुझे क्वेश्चंस करवाने इकट्ठे करवाओ या बाद में करवाओ, दैट एक्चुअली डजंट मेक एनी डिफरेंस.
Any queries? I guess there are no queries. So this is all from my side. Thank you so much, guys. God bless you. I'll see you at 9 p.m. Be on time. Take care. Bye bye.